all see the newspaper on the screen? Is it visible to all of you? No, sir. Newspaper is visible to you, right? Yes, sir. It is, sir. So please keep your pen and notebook ready, keep your syllabus ready, so that we can note down the topics. Yes, sir. So let's start with the world affair notes. So Donald Trump said that some countries are not eager to help unblock the strait. So which strait is blocked by Iran? Now Donald Strait Trump का of ये कहना है Hormuz. कि कुछ कंट्रीज हैं वर्ल्ड में that they are not ready to help to unblock the strait. This is what Donald Trump has said. So Donald Trump has requested many countries in the world to send their army, send their forces, so that the choked Strait of Hormuz could be unblocked. But many countries, of course, those countries who do not agree with the American aggression policies like China, Iran, or even India, they are not helping them. This is what Donald Trump says. It means that America alone cannot unblock the Strait of Hormuz, which has been blocked by Donald Trump. Is it clear? So the countries like Germany, Spain, Italy opt out. They don't heed to the request of the Donald Trump. Donald Trump ने जो ये request की थी कि उन्हें मदद करने के लिए कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिलीज करने के लिए. So Germany, Spain, and Italy have opted out. Iran says 200 children have been killed in the conflict. तो ये जो ईरान और इसराइल और ईरान एंड यूएसए के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पिछले 10-15 दिनों से जो वॉर जारी है between these two countries. So in that conflict, more than 200 children are killed. So we know that killing of the children during the war is a violation of United Nations, children's right, United Nations human right, etc. So that is what Iran is trying to say. Yeah. So emergency workers at the damaged residential building in Tehran. Tehran is the capital of which country? Iran. Iran. Very good. So read this whole article, that what Donald Trump is trying to say, and why the countries like Italy, Spain, and Germany, they are not helping to America in releasing or unblocking the Strait of Hormuz. Now let's move on to the next page. Oscar award has been declared by the Academy. So MPSC exam में क्वेश्चन पूछे जाते हैं that या वर्षीचा 2025चा ऑस्कर पुरस्कार खालीलपैकी कुठल्या ऍक्टरला कुठल्या मूवीला मिळालेला असा प्रश्न विचारला जातो. सो the cast members celebrate as they escape the Oscar Best Picture for the movie called One Battle After Another. मतलब एक के बाद एक बैटल होते जा रहे हैं. This is what is the name of the movie, and that Oscar award goes to this movie, that is One Battle Another. Best actor Michael Jordan, you can check it out. Then Best Actress award is given to Jessie Buckley for movie Hamnet. Best picture is One Battle After Another. So save this all information for other competitive exams. UPSC में तो अभी पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, because when we check it out, the PYQ for last 10 to 12 years or maybe around 14-50 years, UPSC has not asked such type of questions, but MPSC में पूछे जाते हैं in current affairs category. So I have suggested you to make a separate page for current affairs for MPSC, और वहां आपको ये सारे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछे गए हैं प्रीवियसली इन एमपीएससी एग्जाम. इज इट क्लियर? Yes, sir. So main page of today's Indian Express, there is a setback for opposition, no shows and cross vote in Bihar and Odisha. तो ओडिशा और बिहार में क्रॉस वोटिंग हो गया है, उसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज हैव लॉस्ट द इलेक्शन. अब कौन सा इलेक्शन चल रहा था? एनीवन रिमेंबर व्हिच इलेक्शंस आर गोइंग ऑन इन इंडिया नाउ? राज्यसभा. So contest for the 11 Rajya Sabha seats across the 3 states. 3 अलग-अलग स्टेट में, that is in Maharashtra and Odisha and Bihar, elections हो गए थे राज्यसभा के लिए. तो who votes in the राज्यसभा votes? Anyone remember? राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोटिंग कौन करते हैं? हमने बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में डिस्कस किया था. MLAs, right? MLA. Yes, sir. Yes. So MLAs
wait to cast their votes in Rajya Sabha polls at the Bihar Vidhan Sabha Patna on Monday. तो अब यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो गया. क्रॉस वोटिंग मतलब the MLAs of one political party has voted to the candidate of another political parties. So this is how it has happened. So it is a kind of setback for the opposition parties. So how many seats have been won by? That's what is explained here. NDA has won 5 member of parliament. Haryana 2 seats have been there, and in Odisha, so Bihar, Haryana, and Odisha में elections हो गए. ठीक है. The Supreme Court has rapped to the Allahabad High Court judge over bail in dowry death. तो Allahabad High Court में कुछ dowry death में bails दिए गए थे. So in 3 months, the judge of the Allahabad High Court has given bail for 508 out of the 5 tons of such cases. मतलब जो डाउरी से रिलेटेड जो डेथ केसेस हुए थे और जिनमें सजा हो गई थी, ऐसे लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने 508 लोगों को जमानत दी थी. सो व्हाट आर बेल, व्हाट आर द रेगुलर बेल, व्हाट आर द एंटिसिपेटरी बेल, व्हाट आर नॉर्मल बेल, दैट आई विल बी डिस्कसिंग बिकॉज वी हैव सीन इन टुडेज क्लास that UPSC is asking the question on types of the bail in prelims exam, right? So अब क्या हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 508 लोगों को बेल दी गई थी, जमानत दी गई थी आउट ऑफ दिस 5 केसेस. So this was not liked by the Supreme Court. So Supreme Court has rapped to that judge who has given this bail. So the structure and language and bound amount of the similar across the bail orders, that is Justice Pankaj Bhatia between October and December 2025. ऐसे क्यों हो गया होगा? What could be the reason? Why one of the judge of the High Court of Allahabad, actually Allahabad is again a name of the High Court of UP. UP के High Court का नाम Allahabad है. जैसे महाराष्ट्र High Court का नाम क्या है? What is the name of the High Court of Maharashtra? It is called Bombay High Court, right? Bombay High Court. Then in Tamil Nadu, it is Madras High Court. In Karnataka, it is Karnataka High Court. But अब यूपी का जो हाई कोर्ट है उसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट. द नेम इज स्टिल नॉट चेंज्ड, राइट? तो नाम अब तक चेंज नहीं किया है. शहर का नाम चेंज हो गया है इलाहाबाद का. व्हाट इज द नेम ऑफ द इलाहाबाद चेंज टू प्रयागराज. Prayagraj. But still, the name of the High Court of Allahabad is not changed. तो इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट है उन्होंने 510 में से 508 ऐसे केसेस में जमानत दी है which is not like by Supreme Court. तो ऐसे क्यों हो गया होगा? What could be the reason for this? Sakshi, do you think there might be a case of corruption in this particular case? मतलब 510 पैकी 508 जणांना जर जमानत मिळालेली असेल तर तिथे करप्शन झालेले असेल, बिकॉज ऑल द ऑर्डर्स they had the same structure, same language, same bond. So it means that there might be some chances of the corruption in this case, right? And that is why the Supreme Court has rapped to the judge of the Supreme Court of Allahabad. So read this whole article to understand that how even judiciary is also engrossed with the corruption. लेकिन फिर भी हमने देखा था कि क्लास 8 स्टैंडर्ड के बुक में जुडिशरी में करप्शन है ऐसा लिखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट लाइक इट. You remember? Yes, sir. Yes. चले, so this is one of the issue. Now let's move on to next page. NIA. NIA क्या है? Any idea? इकरा, what is NIA? Ikra, Sakshi, you remember what is NIA? National Investigation Agency. National Investigative Agency. So what does this National Investigation Agency investigate? कौन से केसेस से NIA investigate करता है? Terror attacks. Terror activities related, right? Yes. So NIA has arrested around 6 Ukrainians. म्हणजे भारतामध्ये 6 युक्रेनियन आलेले होते, त्यांना अरेस्ट करण्यात आलेले. One from the US for plotting terror activities in India. तर हे जे 6 युक्रेनियन नागरिक होते ते भारतामध्ये येऊन टेरर ऍक्टिव्हिटी करण्याच्या तयारीमध्ये होते, ते टेरर प्लॉट करत होते. तर अशा 6 युक्रेनियन नागरिकांना भारताच्या NIA ने इन्व्हेस्टिगेट केलेलं आहे. सो नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी
has arrested 7 foreign nationals, 6 Iranian nationals, and 1 from the United States on a charges of conspiring to carry out the terrorist activities in India. Do you remember terrorism is one of the internal security challenge in India? One of the greatest internal security challenge in India. So not only this terrorism is done by the internal forces, but no, they are being done by the foreigners as well, like state and non-state actors. So who are those 7 people? One from USA and another for 6, and why they were planning to have a terror attack in India? That's what you need to check it out. So they have crossed Myanmar. Do you remember Myanmar? Myanmar is one of the bordering country of India, with which India shares its border. तो हमने देखा हुआ था कि one of the challenge between India Myanmar relation या India Myanmar border is that कि many a times the foreign nationals infiltrate into India through the Myanmar. So these people have crossed into Myanmar, where they reportedly met ethnic groups hostile to India, and investigations also uncovered that multiple consignments of the drones from the Europe were delivered by them in Mizoram. So all these, on these people, they were conspiring the terror attacks in Northeast India. एक फैमिली मैन नाम की एक वेब सीरीज है. Has anybody seen that web series Family Man? Yes, sir. So there are 3 seasons: season 1, season 2, and season 3. In season 3, they have shown that how internal security challenges created from the border nation of India, like Myanmar. Myanmar से कैसे इंडिया में China and other countries, they infiltrate in India and they create internal security challenge in India. That is shown well in that web series. कभी कभी आपको वक्त मिलता है, like those first year and second year students, you can watch that to understand that how normally such type of internal security challenges are created by various state and non-state actors. Is it clear? Yes, sir. The name of the web series, Family Man. So these 6, on the what you can say, the foreign nationals, Ukrainian and US, they were giving the drones, and this has been brought from the European, and they were delivered in the state of Mizoram. So GS paper 3 का topic है internal security challenges. Fine. So in less than 24 hours, Election Commission replaces the Mamata Banerjee's top officer. So क्या once the election is declared, once the model code of conduct is declared, so does all the administrations comes under the Election Commission of India? मतलब जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर हो जाता है, जब भी elections डिक्लेयर हो जाते हैं, तो what happens? The government cease to function. All authorities in the state government, they works under the the Election Commission of India. तो कल ही हमने देखा था, the Election Commission of India has declared the elections in Bengal and some of the other states. And we know there is always clashes happens between the West Bengal government and the union government, that is central government. So election declare होने के बाद, within 24 hours, the Election Commission has replaced all the top office of the Mamata Banerjee and CS to GDP. That is, Chief Secretary to Director General of Police. All these officers were transferred from West Bengal to other states. So Bengal Chief Minister says this reshuffle is done at the behest of BJP. तो ये BJP के कहने पे Election Commission ने ये reshuffle किया है या ये transfer किया है. This is what Mamata Banerjee says. But ये आरोप हमेशा से लगते रहते हैं that Election Commission of India is functioning or it is being biased to the ruling party. ऐसे कहा जाता है. Ideally they are not supposed to do so. लेकिन suppose अगर ऐसे पाया जाता है कि that Election Commission of India is working in a biased way, so what is the mechanism, what is the way, what is the system created in India? Ideally, it is expected that the Election Commission of India is supposed to work in free and unbiased manner, because election ही अगर free and fair manner में नहीं होंगे, so there will be no any value for the democracy, right? In Constitution of India at work की जो NCERT है, 11th standard NCERT, in that NCERT second or third chapter is related to election.
तो उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, हाउ कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज very important to any democratic country, and how does the election commission of India is having this responsibility to conduct the election in free and fair manner. बट पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ये हमेशा से आरोप लग रहे हैं that it is not working in a unpartisan way, it is working or functioning in a way that it will favor to the ruling party, especially ruling party of the central government. Is it clear? तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का यही कहना है कि ये जो रिशफल किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इट हैज बीन डन एट द बिहेस्ट ऑफ बीजेपी. दिस इज व्हाट ममता बनर्जी, द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, हैज सेड. क्लियर? Yes, sir. Now let's move on to next page. बनाऊंगा मैं और बनाऊंगा भारत. This is the new slogan by there is one company that is AM and DNS in India. So there you can check it out that energy, renewable energy को लेकर जहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है. ArcelorMittal and Nippon Steel in India, they are the joint venture. ArcelorMittal is Indian company, Nippon Steel is a Japanese company. Both are having a joint venture to develop the renewable energy in India. Market shut in Leh, Kargil as protester demands for the statehood. So immediately after the release of Sonam Wangchuk yesterday, we can say again the people of Leh, again the people of Ladakh, they have started protesting, they have come together, they have assembled, and they are protesting in Ladakh, and they are demanding for the statehood. Now currently, Ladakh is a state or Ladakh is a union territory? यूनियन टेरिटरी. एज पर द आर्टिकल 370 को जब स्क्रैप किया गया था, आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया गया था, तो उस समय में लद्दाख हैज बीन क्रिएटेड एज अ सेपरेट एंटिटी. इट हैज बीन क्रिएटेड एज अ यूनियन टेरिटरी विदाउट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, अनलाइक द जम्मू एंड कश्मीर, राइट? तो जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, बट इट वॉज जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर. So partial statehood is given to the state of Jammu and Kashmir, but for Ladakh, it is a complete union territory. The complete control of the Ladakh is under the union government. So the people of Ladakh, they are demanding that they should be given a status of the statehood, right? Statehood देने की मांग अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हमेशा करते रहते हैं. लाइक जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो डिमांडिंग द फुल स्टेटहुड, दिल्ली इज ऑल्सो डिमांडिंग अ फुल स्टेटहुड. Then the states like Puducherry, union territories like Puducherry, they are demanding for a full statehood, but Ladakh में ये demand बहुत ज़्यादा हो रहा है. So this might has happened just because Sonam Wangchuk has released yesterday. So read this whole article to understand that what is the demand of the people of the Ladakh and why they are demanding those the demands, right? तो यहाँ पर हम देखेंगे. So recently we have seen that in 2025, fresh elections to the council have not been announced since the Ladakh was carved out of the former state of the Jammu and Kashmir as a union territory without a legislature. There has been some anxiety around the lack of the adequate democratic representation for the people, barring one MP from the region. There is only one member of parliament from the Ladakh, right? So Ladakh is one of the largest constituency in terms of area. Area wise, largest what you can say region है, टेरिटरी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है. तो इंडिया में जो लोकसभा में जो मेंबर जो सेंड किए जाते हैं, इज इट सेंड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और इज इट सेंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉप्युलेशन? पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन म्हणजे ते एरिया खूप मोठा आहे आणि पॉप्युलेशन खूप कमी आहे, बिकॉज इट इज अ डेझर्ट द लोकेशन. तर खूप मोठ्या एरियासाठी फक्त एकच मेंबर ऑफ पार्लमेंट इथे पाठवण्यात आलेला आहे. And apart from that, no other elections are there, no local bodies, no tribal council, etc. So the Hill Council in Kargil is currently the 3rd year of its term. So one of the important demand of the people of the Ladakh that the Ladakh has been in conversation with the Ministry of Home Affairs over
4-point agenda. This includes, now what are their main demands, the people of the Ladakh? One is that ki statehood for the Ladakh, safeguards under the 6th schedule over the constitution. Do you remember 6th schedule of the constitution? म्हणजे Yes. काही राज्यांमध्ये 6 शेड्यूल प्रमाणे काही राज्यातल्या ट्रायबल कम्युनिटीजना, काही राज्यातल्या आदिवासी लोकांना काही प्रोटेक्शन देण्यात आलेले आहेत. अँड ॲज पर दॅट 6 शेड्यूल tribal councils are formed. These tribal councils are the representative bodies of the tribal communities. Like recently आपण बघितलेलं होतं, एका राज्यामध्ये या ट्रायबल काउन्सिलच्या इलेक्शनच्या दरम्यान व्हायलन्स झालेलं होतं. एनीवन रिमेंबर? Last week, in which state of India the violence has taken place during this tribal council elections? Manipur, sir. Manipur, sir. Not in Manipur. मणिपूरमध्ये तर होतच आहे इलेक्शनच्या वेळेस. म्हणजे मणिपूरमध्ये नॉर्मल ही तिथे व्हायलन्स होत आहे. आय एम आस्किंग इलेक्शनच्या दिवशी वेळेस एका राज्यामध्ये व्हायलन्स झालेलं होतं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट. यू डोंट रिमेंबर? आणि त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ते विक्टिम्स होते त्या व्हायलन्सच्या, त्यांना जाऊन भेट घेतलेली होती. अँड ॲट दॅट टाइम ही सेड दॅट आय डोंट फिअर अबाउट एनिथिंग. रिमेंबर? इट इज इन मेघालय. यू रिमेंबर? मेघालय में हो गया था. मेघालय के आरबी जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं, कार्बी आंगलोंग एंड दिस गारो हिल काउंसिल, वहां के इलेक्शन के दौरान में वायलेंस हुआ था और वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि आई डोंट केयर अबाउट इट, ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया था. यू रिमेंबर? तो मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब 6 शेड्यूल में मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को क्या दिया गया? प्रोटेक्शन दिया गया. ट्राइबल काउंसिल्स वहां पर बनाए गए हैं. तो उसी तरीके से लद्दाख, द पीपल ऑफ लद्दाख, they also demanding the same the demand, right? So Ladakh is in Jammu and Kashmir, it is not a part of the northeastern India, right? So their demand is, सबसे पहला डिमांड क्या है? safeguards for this region under the 6th schedule, then reservation in jobs for the youth in Ladakh, and the creation of the separate parliamentary constituencies for 2 parts of the region. तो लद्दाख के 2 रीजन में, लेह एंड लद्दाख, तो ये लेह के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहिए एमपी के लिए, और लद्दाख एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहिए. दीज आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल इन लद्दाख. क्या इस तरीके का डिमांड, इस तरीके की रिक्वेस्ट या इस तरीके की मांग रखने का अधिकार इंडिया, मतलब वहां के लोगों को है, सिटीजन्स को है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. It is there, but it has to be done in a peaceful way. Yes or no? It has to be Yes, done in a sir. peaceful way, without arms, without any violence, right? Without Yes, sir. disturbing to the law and order situation, without you can say destructing the public property. Is it clear? So the organization which is protesting, this is called as Kargil Democratic Alliance. Kargil Democratic Alliance नाम का एक organization है, and there is one more organization, that is a KDA and ABL. These 2 organizations have have started this protest. Is it clear? Yes, sir. ठीक है. Who is the MP of Ladakh? Any idea? Member of Parliament of Ladakh. Ladakh Member of Parliament Mohammad Khanifa Jan, who has backed this protest, also joined the rally at Kargil. तो वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लद्दाख के, he has also supported this the protest by the people of Ladakh, but blaming the MHA for stalling the dialogue. तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है सागर? How this problem can be solved? And what is the reason that why Ladakh is been declared as a union territory by the government? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? Is there any strategic reason behind this, Sagar? Are you there? Sagar, is my voice audible to you? Can you unmute yourself? I think he has left. Yes. कोई और बता सकता है? What could be the reason that why Ladakh is declared as a union territory? What is that strategic reason? इसकी एक वजह क्या हो सकती है? The reason behind it is that Ladakh is bordering with China, और चाइना से बचाने के लिए, to protect the Ladakh from the aggression of China,
the union government feels that it should be a union territory so that it can directly control this region to protect from the aggression of China. Is it clear? तो Yes, उसके sir. लिए the Union Home Ministry need to have a dialogue with the people of the Ladakh to solve this problem. So MHA, the activists have blamed stalling the dialogue with the HPC within the HPC. He said that the decision to create the Union Territory was forced upon us without consultation, and therefore the current unrest is a direct result of the center's the own policy. तो वहां के लोगों के साथ में कंसल्टेशन न करते हुए यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था. This is what is the people of Ladakh saying that is why they are protesting. That the same thing was also done. ये जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, आर्टिकल 370 was specifically with the Jammu and Kashmir. आर्टिकल 370 has given special safeguard to the people of the Jammu and Kashmir. तो वहां के लोगों के साथ में किसी भी तरीके का कंसल्टेशन, डायलॉग या डिस्कशन न करते हुए ये यूनिलैटरली डिसीजन लिया गया था by the union government. This is what the people of Jammu and Kashmir said when Article 370 was abrogated. तो आर्टिकल 370 क्या है? What is Article 370 and why it was abrogated? What changes have been made into the constitution after abrogation of Article 370? So that we will discuss later. In basics of Indian polity class में हम discuss करेंगे. Clear? तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है लेह एंड लद्दाख में, दिस इज द इम्प्लीकेशन, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इज इट क्लियर यू? Yes, sir. Sir, एक हाँ, question. यस. किसी को कुछ डाउट है? Yes, sir. मला. हाँ, यस. सर, ते युपीना आपण फुल स्टेट का म्हणजे गव्हर्नमेंट का फुल स्टेट देऊ शकत नाही सर युपीला? So for that reason we need to understand union territory म्हणजे नेमका काय, why some of the regions in India they have been declared as a union territory, आणि ते केंद्राच्या डायरेक्ट कंट्रोल मध्ये का असतात ते कन्सेप्ट आपण जर एकदा समजून घेतलं तर यू विल कम टू नो why the government is not giving the full status to the union territories like Ladakh, because Ladakh हे चायनाला लागून आहे आणि युनियन गव्हर्नमेंटला असं वाटतं की चायनाला लागून असल्यामुळे चायना क्लेम करतो लडाखवर की तो आमचा भूभाग आहे, तो चायना कधीही लडाखवर अटॅक करू शकतो, तो भाग आपल्या ताब्यात घेऊ शकतो, आणि असं होऊ नये म्हणून युनियन गव्हर्नमेंट त्या लडाख रिजनला स्वतःच्या कंट्रोलमध्ये ठेवू इच्छितो. इट वॉन्ट्स टू कीप अंडर इट्स ओन कंट्रोल सो दॅट इट कॅन डिफेंड दॅट लँड डायरेक्टली. गॉट इट सागर? सॉरी लावण्या. येस सर. आणि जम्मू काश्मीरचं पण तेच रिजन होऊ शकते का? Same. Jammu and Kashmir is also the same reason. And what about Delhi, sir? Delhi, since it is a capital of the country, and many foreign dignitaries, many foreign offices, even union government offices are located in Delhi. So this is one reason that why union government think that the control of the Delhi should be also under the union government and not as a separate state government. Because the seat of the union government is located in Delhi itself, right? Yes, sir. Got it, Jitendra? So every union Yes, territory sir. has a reason. Like Andaman Nicobar is also having a reason. Why Andaman and Nicobar is a union territory? Why it is not been declared as a separate state? Because Andaman and China. Nicobar is located in Indian Ocean, and strategically to protect the Indian Ocean को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां के मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखना जरूरी है फॉर अवर मेरीटाइम सिक्योरिटी. One reason. The other reason is also protection and conservation of the tribal communities in Andaman and Nicobar region. वो एक वजह है. And there are like Puducherry is also union territory. Puducherry, do you know Puducherry is distributed in 3 different states? Like some part of the Puducherry is Kerala, some part of the Puducherry is in Tamil Nadu, some part of the Puducherry is in Andhra Pradesh. तो ये जो पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, once upon a time it was a French colony. मतलब वहां पे फ्रेंच लोगों की कॉलोनी थी. मैक्सिमम पीपल हु आर लिविंग इन पुडुचेरी दे आर फ्रेंच इन ओरिजिन. फ्रेंच लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है. तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको रोकने के लिए वहां पर इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी.
Another union territory like Daman and Diu is also having a strategic reason. और कौन सा यूनियन टेरिटरी है इसके अलावा? चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी बिकॉज पंजाब और हरियाणा दो स्टेट अलग अलग जब बने हुए थे तो उस समय में कंट्रोवर्सी चल रही थी कि चंडीगढ़ शुड बी गिवन टू पंजाब और इट शुड बी गिवन टू हरियाणा. सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट कि एज ऑफ नाउ चंडीगढ़ विल बी यूनियन टेरिटरी. बाद में डिसाइड किया जाएगा, ऐसा डिसाइड किया था, बट अब तक it is still not been, Yes, sir. what you can say, decided that whether Chandigarh should be the part of Yeah. Haryana or it should be the part Yes, of sir. Punjab. Right? एक और चीज बार बार हमेशा न्यूज़पेपर में आती रहती है, महाराष्ट्र में खासकर इसकी चर्चा बार बार होती रहती है कि यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक मुंबई एज अ यूनियन टेरिटरी. मतलब मुंबई को भी यूनियन टेरिटरी बनाने की प्लान यूनियन गवर्नमेंट कर रहा है. ऐसे कुछ लोग महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में ये चीजें चलती रहती है बिकॉज वजह बताई जा सकती है कि सिंस मुंबई इज अ इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बीइंग हेल्ड इन मुंबई, तो इसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में रखने की जरूरत है. ऐसे कन्विंस अगर कर देगा यूनियन गवर्नमेंट तो उसको किया जा सकता है. दिस इज पॉसिबल when BJP gets more than 400 MPs. Is it clear? Sir. तो मोर देन 400 MPs अगर होते हैं तो 2/3 मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐसे चीजें की जा सकती है. Anyways, now let's move on to next page. Yes, any other doubt? Jitendra, is it clear? I hope your doubt is clear now that why some of the territories of India have been declared as a union territory by the government. Yes, Is sir. it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया था when he had given certain comments on social media platform with respect to the Operation Sindoor. You remember? There was a professor. The name of that professor is Ali Khan, sir. Ali Khan, Professor Ali Khan, Mahmudabad. You remember that, Sakshi? Yes, sir. So, sanction not given to prosecute Ashoka University professor as an act of magnanimity. This is what Haryana government has told to the Supreme Court. तो उनको बेल मिल गई थी, जमानत मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. So, Ashoka University has not given a permission to prosecute against their professor. This is what Haryana government has said. Do you remember recently the Delhi government has started Atal canteens at subsidized rate, right? So 4 Atal canteens are shut as LPG shortage hits the government flagship welfare scheme for the poor. Welfare schemes by the various section of the society. एक topic है. कौन से पेपर में ये topic? This Yes, topic is yes, there sir. in GS paper 2. Yes, sir. Correct? Welfare schemes for the marginalized section of the society by union and state government, right? तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक वेलफेयर स्कीम शुरू की गई थी अटल कैंटीन नाम की. तो 4 ऐसे अटल कैंटीन जो है वो एलपीजी शॉर्टेज की वजह से क्या हो गए, शट डाउन हो गए. द गवर्नमेंट इज सेइंग इन द पार्लियामेंट दैट कि देयर इज नो एनी शॉर्टेज ऑफ द एलपीजी एंड पेट्रोल एंड एक्सेट्रा, बट ऑन रियलिटी, इन ग्राउंड रियलिटी, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि दिस इज नॉट ट्रू. There is people are feeling that the crisis of the LPG shortage. The suspension of the 8 opposition member of parliament is going to be revoked today. तो पार्लियामेंट में काम करते वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी कभार कुछ अलग अलग तरीके यूज करते हैं प्रोटेस्ट करने का या क्वेश्चन पूछने का. तो इफ देयर बिहेवियर इज अनपार्लियामेंट्री, then speaker of the Lok Sabha has the power to suspend them for particular period.
तो कुछ 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया था, तो उनको आज रिवोक किया जाएगा. सो दे विल बी अगेन starting participating in the proceedings of the parliament. So which are those suspended parliaments? You can check it out there. The suspended parliamentarians and the others have started raising the slogans on the LPG issue as Member of Parliament Priyanka Gandhi looks on. Can you see Priyanka Gandhi here? Yes, sir. Okay. So opposition party, leader of opposition party, Mallikarjun Kharge in Rajya Sabha. LOP in Rajya Sabha is Mallikarjun Kharge, and LOP in Lok Sabha is Rahul Gandhi. Was there any question on leader of opposition in PYQ previously? Yes, sir. Yes? Anyone remember what was Yes. that question? किसी को याद है क्या क्वेश्चन पूछा गया था? The minimum number of the MPs needs to be elected from a political party to be given a status of LOP. And during Jawaharlal Nehru's time in 1969, the leader of opposition has been given a what you can say statutory status, right? So as a leader of opposition, Mallikarjun Kharge blames the government for this LPG crisis, and Congress is trying to create anarchy. This is what the BJP says. So we have seen one of the important function of the Parliament of India, one of the important function of the legislature. Yes, मतलब कानून बनाने के अलावा दूसरा जो important function होता है पार्लियामेंट का वो क्या होता है? Holding accountable and answerable to what? To the ruling party, to the executive for the problems of the country. तो ये इंडिया में जो अभी LPG क्राइसिस जो चल रहा है, उस क्राइसिस के लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया गया by the opposition party. So opposition parties believe that because of the faulty foreign policies, this crisis is happening in India. फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2011 में जो सेंसस किया गया था, that data needs to be used, and the panel says that the continued reliance on 2011 census data may lead to exclusion of beneficiaries. जे लाभार्थी आहेत त्यांना एक्सक्लूड होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. दिस इज व्हॉट इज सेड. एनी आयडिया हू हॅज पास दिस बिल, फूड सिक्युरिटी ऍक्ट, when it was passed, and who was the Prime Minister of India when this Food Security Act was passed? Sakshi. Dr. Manmohan Singh, sir. And what is this Food Security Act? क्या है ये फूड सिक्योरिटी एक्ट का? NFSA, which is popularly called as National Food Security Act. क्या है एग्जैक्टली ये? किससे रिलेटेड कानून है? फूड सिक्युरिटी से रिलेटेड. म्हणजे काय फूड सिक्युरिटी म्हणजे नेमकं एक्झॅक्टली काय? बी स्पेसिफिक. PDS सर, पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टमच्या माध्यमातून नॅशनल फूड सिक्युरिटी ऍक्ट इम्प्लिमेंट केला जातो, पण एक्झॅक्टली त्या कायद्यातल्या तरतुदी काय आहेत? व्हॉट आर द प्रोव्हिजन्स ऑफ द नॅशनल फूड सिक्युरिटी ऍक्ट? लाईक नरेगाच्या आपण म्हणतो ना 125 days, गॅरंटीड जॉब फॉर द अनस्किल्ड वर्कर्स एक्सेट्रा. तसा नॅशनल फूड सिक्युरिटी ऍक्ट मध्ये एक्झॅक्टली काय प्रोव्हिजन आहेत? Providing free ration. It is mentioned here that National Food Security Act was enacted by the then UPA government in 2013, and it provides for the coverage up to 75% of the rural population and up to 50% of the urban population, which at the census 2011 comes around 81 crore. तो 81 करोड़ लोगों को क्या दिया जाता है? PDS के द्वारा राइस एंड वीट दिया जाता है. सो एट प्रेजेंट अगेंस्ट द इंटेंडेड कवरेज ऑफ द 81 करोड़ पॉपुलेशन, ओनली 80 करोड़ बेनिफिशियरीज आर कवर्ड, सो लिविंग द स्कोप ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ 0.79 करोड़ बेनिफिशियरीज. तो एक पैनल, पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशन किया है दैट कि 2011 के बेसिस, सेंसस के बेसिस पे ये जो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इट इज एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द बेनिफिशियरीज. तो गवर्नमेंट स्कीम कैसे होना चाहिए? एक्सक्लूजनरी होनी चाहिए या इंक्लूजनरी होनी चाहिए? साक्षी.
The government should be inclusive or the government scheme should be exclusive? Inclusive. म्हणजेच सबका साथ सबका विकास. Am I right? Yes. तो हे होत नाही, म्हणजे काही जणांना काय केलं जातंय त्या योजनेमधून बाहेर काढलं जातंय. This is why we shouldn't rely on the 2011 census data. This is what the panel says. So read this whole article. Issues related to National Food Security Act. एक वेगळं पेज आपल्याला बनवायचं आहे. What is National Food Security Act? What are the provisions of that? And what are the issues of the National Food Security Act? You need to know. In GS paper 2, there is one topic called poverty and hunger. There is one separate topic called food security. So every year there is at least one question is asked with respect to poverty, hunger, food security, etc. Clear? This is useful for mains as well as prelims exam. In prelims exam, the question can be asked with respect to the provisions of the National Food Security Act, while in mains exam, the question will be asked about the issues arising out of this National Food Security Act. So one of the important issues that the data used for identifying the beneficiary is of 2011 census data, which needs to be updated. Is it clear? Yes. Yes, sir. War in the Middle East, where it is headed and what happens now. This has been discussed by one of the expert of the foreign affairs, that is Navdeep Puri, who was a former Indian ambassador to UAE and Egypt. So he will be discussing the issues of what is the end game. Is the US and Israel justified in attacking the Iran? US आणि इस्रायलने जो इराणवर जो अटॅक केलेला आहे ते जस्टिफाईड आहे का? Can this question be asked to you in interview? Yes, sir. So what do you think? The attack of US and Israel on Iran, is it justified or not? No, sir. काय कारण सांगण्यात आलेलं होतं? अमेरिका आणि इस्रायलने अटॅक करण्यापाठीमागचं जस्टिफिकेशन काय दिलेलं होतं? एक तर आपण discuss- Right? yes, sir. So if you want to give the answer of such question in interview, you need to, watch this interview. So is the US and Israel justified in attacking Iran? What is happening inside Iran now? Regime change होत आहे का? किंवा the people of Iran are supporting to the new supreme leader, that is Mustafa Khamenei. And what will be the new supreme leader Mustafa Khamenei's strategy? How does West Asia view the war? Other countries of the West Asia, how they are viewing this war? How is India's position on the war perceived by the different nations? तो सर्वात महत्वाचं आहे भारताचं काय यावर मत आहे किंवा भारतावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो? How far is it going to impact India's economy and its diaspora in the region? Indian diaspora topic आहे सिलेबस मध्ये? Yes, sir. In GS paper 2. GS paper 2 or paper 3? 3, sir. Paper 2 मध्ये आहे Indian diaspora and the issues arising out of it, right? So around 10 million population of India lives in the Middle East. और ह्या वॉरमुळे इस्रायल आणि अमेरिकेच्या वॉरमुळे भारताच्या इकॉनॉमीवर काय परिणाम होऊ शकतो आणि भारताच्या डायस्पोरावर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? That's what that will be discussed in this session. So it will be held on 19th March. 19th March means day after tomorrow at 5:30. All of you please join this session and make up points. वेगळे पॉइंट्स तुम्हाला एक पेज, जास्त डिटेल मध्ये बनवायचं नाही, फक्त एक पेजच्या शॉर्ट नोट्स तुम्हाला काढायचे. That will be useful for mains and that will be also useful for your interview preparation as well. Clear? Okay, sir. Now how to join? Scan this bar, this the QR code. So you can register and you will get a link to join this session. Yeah, otherwise I think Anand normally shares it in the group. So he shares the link, then you can join directly from there also, right? Yes, Chal. sir. Anand, are you there? Okay, fine. Now Suvendu will contest from Nandigram and
भवानीपुर। तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंडिया में अभी फिलहाल एमपी और एमएलए के इलेक्शन के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूशन में एक साथ लड़ा जा सकता है? आज ही के हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया था, याद है? टुडेज पीवाईक्यू, देयर इज वन रूल, 1991 का एक केस था, राइट? देविका लाल हैज कंटेस्टेड द इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसे दिया हुआ। तो उसके बाद उन्हें एक रूल बनाया गया वेर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैनॉट कंटेस्ट मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट? सो द सेम थिंग यू कैन चेक इट आउट हियर दैट कि शुभेंदु अधिकारी नाम के एक बीजेपी के लीडर हैं in West Bengal, and he is considered as a chief ministerial candidate in West Bengal. So he is going to contest the election in 2 constituencies, one in Nandigram and another is Bhawanipur. Clear? So in last election, this Subhendu Adhikari has defeated Mamata Banerjee. मतलब ममता बनर्जी के पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सारी सीटें जीती हुई थी, but Mamata Banerjee herself has defeated, and it was defeated by Subhendu Adhikari. So this leader of opposition has defeated Mamata from Nandigram in 2021. BJP names 142 candidates in Bengal and gives pushback to the rank and file. तो ये इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज है, बट यू नीड टू कीप वॉच ऑन दैट सो दैट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में जो आप इस तरीके के पॉलिटिकल न्यूज को देखने के बाद सॉल्व कर सकते हो। Now let's move on to next page. Today's editorial is with respect to the election in 4 states in India, the 4 state arenas, and poll dust that will spill over. तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं उस समय में क्या होता है? उस समय में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो द डस्ट ऑफ दिस इलेक्शंस, मतलब द इलेक्शंस आर हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल, द इलेक्शंस आर गोइंग टू हैपन इन केरला, बट इथे जी उठलेली जी वादळ आहे आणि त्या वादळामुळे निर्माण झालेली जी धूळ आहे ते दुसऱ्या राज्यामध्ये देखील येऊ शकते। नॉर्मली ऐसे होता है इंडिया में that the elections are being held in other states, but that might also have a spill over to the other states in India as well. So this is the political news with respect to the elections. So read this whole article to understand that how the elections are normally contested in India. तो the issues of federalism जिस टॉपिक था आज के पीवाईक्यू में हमने डिस्कस किया था, Yes, sir. federalism, right? The issues of federalism will be raised in the campaign for Tamil Nadu. So Tamil Nadu ऐसा state है which always in support of the strong federalism. Strong federalism means state government should be given more the power compared to the union government. This is what this believes. तो ये जो issues of federalism है will be raised in the campaign for Tamil Nadu, where the new player had set off the freezer. Who are the new political parties in Tamil Nadu now? हमने देखा था recently एक नए एक्टर है, तमिल एक्टर, उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के रैली में देयर वाज अ स्टैम्पीड। एनीवन रिमेंबर? Vijay Thalapathy, sir. Yes, Vijay Thalapathy, right? So अब ऑलरेडी तमिलनाडु में AIDMK is there, DMK is there, कांग्रेस और बीजेपी का तो वहां पर मतलब बहुत ज्यादा एमएलए वहां पे चुनकर आते नहीं है, बिकॉज तमिलनाडु पॉलिटिक्स इज बेस्ड मोर ऑन द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, द्रविड़ा मूवमेंट, which was started during the freedom movement by the people like Ramaswamy Naicker, Justice Party, people like Anna DMK, etc. तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है, they don't win much of the seats. The real fight is between the Dravidian political parties only. One more political party now has entered into the politics of Tamil Nadu, that is the party of Vijay, right? So where a new player has set off the freezer amid the decade long status quo made of the alternation in power of voting 2 big Dravidian parties. So which are those 2 big Dravidian parties in Tamil Nadu? All these parties, that is whether it is TMC in West Bengal, DMK in Tamil Nadu, or NCP Shiv Sena in Maharashtra,
all these political parties are called as regional political parties, right? तो PSIR के लिए important है that the politics in India, the politics of regional political parties like DMK, etc. So there are two big, Dravidian parties, and in Kerala, pre-poll jostling is rearranging traditional, the equation with the CPIM. तो केरला में कौन से पार्टी का रूल है अभी फिलहाल? In Kerala, there is a Communist rule of the Party. Communist Party of India, Marxist or Maoist? Marxist. Marxist. So the ruling party, that is CPIM, is reversing its 2018 position on the Sabrimala temple entry issue, and the BJP is addressing the Christian constituency. The upcoming contest will shape the story in these poll-bound states, but they will also be read for how they tweak the frame nationally. So या राज्यामध्ये म्हणजे in Tamil Nadu, BJP is trying to get entry. And Kerala also it is trying to get entry. In Bengal also it is trying to get entry. So जर तामिळनाडू आणि वेस्ट बेंगॉल आणि केरलामध्ये जर बीजेपीला जर चांगलं यश मिळालं, it means that की more and more people are supporting to the Hindutva ideology of BJP. That is what it will be clear. So let's see what will be the result of this election and what will happen there. Now the Wangchuk's release is a welcome, right? कल भी हमने देखा था Sonam Wangchuk has been released by the government after detaining him for for almost more than 5 months. Now it is sobering as well. Sobering मतलब ये एक अच्छी निशानी भी है for a democracy. That is what is mentioned here. He is a Magsaysay awardee. Sonam Wangchuk has been released on March 14. So this release has been done by the central government, right? Central government only arrested him. Now central government has taken a decision to revoke the detention of climate activist and Magsaysay awardee Sonam Wangchuk. So there is a lesson for the center in this episode. Its emphasis on an environment of peace, stability, and mutual trust in Ladakh, and facilitate constructive and meaningful dialogue with all the stakeholders. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के को एक चीज सीखनी चाहिए कि इस तरीके के प्रॉब्लम जब भी आते हैं, whenever such type of problems are happening, the best way is what? The best way is to facilitate the constructive and meaningful dialogue with all the stakeholders. Like कोई भी decision लेने से पहले, मतलब people are not angry because Ladakh is declared as a union territory, or the people of Jammu and Kashmir are also not angry because it has been Article 370 has been revoked. They are angry because these decisions have been taken by the central government without consulting to the people of the territories. Like, do you agree with this that कि अगर किसी रीजन को लेकर वहां पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, तो क्या वहां के लोगों के साथ में बातचीत करके वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके डिसीजन लेना चाहिए? जितेंद्र, suppose if the central government wanted to make Ladakh as a union territory because of any reason, maybe a strategic reason, maybe security reason, maybe of any particular reason, तो ऐसे करने से पहले क्या गवर्नमेंट को वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है? लाइक व्हाई वी आर डूइंग, ये वहां के लोगों को समझा बुझाकर फिर किया जा सकता था, यस और नो? बट व्हाट इज हैपनिंग, गवर्नमेंट नॉर्मली they don't discuss have a dialogue with the all stakeholders. This is what is the problem. Like the same thing has also happened in Jammu and Kashmir. So having a constructive and meaningful dialogue with all the stakeholders means that little unless all views, especially differing and dissenting ones, are heard instead of being shut down. So rather than being shut down, there is a need to have a dialogue with the people, especially जिस जगहों के लोगों के साथ में ये डिसीजन लिया जा रहा है, वहां के लोगों के साथ में बातचीत करना जरूरी होता है. Is it clear to you? Yes, sir. चलिए, fine. In this war, Israel knows what it wants, but US does not. So this is what is said by Hussein Banai. So Israel is using US for winning their strategic goals. This is what he is trying to say. The persons with disabilities, doors to theaters now open. Doors of theaters, acting.
मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोगों के लिए भी थिएटर के डोर्स अब ओपन हो गए हैं. दिस इज व्हाट राहुल बजाज सेज. एनीवन आइडिया हु इज राहुल बजाज? Rahul Bajaj is a co-founder of one organization that is called Mission Accessibility. So he's not the Rahul Bajaj that is, the founder of the Bajaj industry. So he is different. He is different. ये दोनों अलग अलग लोग हैं. The move to impeach Chief Election Commissioner, though symbolic, matters. Do you remember few days back there was one article written in Indian Express. उसमें कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ में जो इम्पीच करने की जो कोशिश की जा रही है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, इट इज अनवाइज ऐसे कहा गया था. यू रिमेंबर? बट योगेंद्र यादव डू नॉट एग्री विद दिस. ही सेड दैट although this impeachment is a symbolic but it matters. तो इसे symbolic क्यों कहा जा रहा है? Any idea why the impeachment of the election commission, chief election commissioner is called as a symbolic one? इसकी वजह क्या है? Sakshi, Rachna, why it is being considered as a symbolic impeachment and not the real impeachment? Farzana, Ikra, we have already discussed this. Pranali, you can also answer. Because of the majority. Because of the majority means what? Exactly what? पूरा statement complete करो फरजाना. सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट के लिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है ना, इसलिए वो सिंबॉलिक का है. कितनी मेजोरिटी लगती है impeachment के लिए? तो स्पेशल मेजोरिटी लगती है. Special majority means 2/3 members of the parliament in both Lok Sabha and Rajya Sabha should support this move. यस सर. तो क्या इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी फिलहाल अपोजिशन पार्टी के पास में है सो दैट दिस रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड इनटू लोकसभा एंड राज्यसभा? नहीं है. लेकिन नहीं ये पता है, अपोजिशन पार्टीज को पता है कि ये तो रेजोल्यूशन पास होने वाला नहीं है, या तो ये इम्पीचमेंट का जो मोशन है वो पास होने वाला नहीं है. लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन पार्टीज ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? जैसे हमने देखा था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के रिमूवल के वक्त में भी गवर्नमेंट ने, मतलब सॉरी अपोजिशन पार्टीज ने इम्पीचमेंट का प्रोसेस किया. पास तो हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किया गया. उसकी पीछे की वजह क्या है? व्हाई डज इट मैटर? तो एज पर योगेंद्र यादव एंड अपोजिशन पार्टीज, और कुछ दिनों पहले एक और राइटर ने भी आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, दे बिलीव दैट कि दिस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन पार्टीज टू expose the nature of the election commissioner. this तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, उसको एक एक्सपोज करने का एक और तरीका मिल सकता है. और उसके अलावा एक और आर्टिकल लिखा गया था इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने कहा था कि द अपोजिशन पार्टी इज ट्राइंग टू यूज ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर इनके खिलाफ में इम्पीचमेंट किया गया, कुछ डिबेट और डिस्कशन हो गया, तो हो सकता है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया माइट ट्राई टू complete his responsibilities and duties in a responsible way, in free and fair manner. तो इसी वजह से इस तरीके के जो इम्पीचमेंट के प्रोसेस हैं पास होने के चांसेस कम है, लेकिन उसके बावजूद भी सिंबॉलिकली ही क्यों ना हो वो मैटर करते हैं. समझ में आ गया? इट्स क्लियर? चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज से that there is one political party in Maharashtra, वंचित बहुजन आघाडी नावाचे राजकीय पक्ष आहे. They normally don't win the election. Normally ते इलेक्शन लढत नाहीत, but every time they contest the election. They know it very well that we are not going to win the election, but still they contest symbolically because इस तरीके के इलेक्शन लड़ना ये क्या है, ये बहुत सारी चीजों को मैटर करते हैं. तो what is the reason that why Dr. Prakash Ambedkar contest the election even though he has an idea that he's not going to win the election? Clear? Chai. Now let's move on to next page. No blanket arrangement with the Iran on ship movement. This is what India's external affair minister says.
हमने देखा था कि इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इज ट्राइंग टू कन्विंस द ईरान to allow the Indian bound ships to be allowed to be in the state of Hormuz, लेकिन फिर अगन उन्होंने कहा है कि नो ब्लैंकेट अरेंजमेंट, ऐसा कुछ ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं हुआ है. ओवर 550 इंडियंस इवैक्यूएटेड सो फार फ्रॉम द ईरान थ्रू आर्मेनिया के द्वारा किया गया. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स विथ ईरान. तो ईरान से बॉर्डर करने वाले, डायरेक्ट लैंड बॉर्डर करने वाले नेशन कौन से हैं, आज जाकर आपको दिखना है. There is high chances that in UPSC prelims 2026, the question will be asked that which among the following countries border with the Iran. Today only you will go and check it out and you will make the list of that. Clear? Yes, sir. So Armenia is one such country which is bordering with Iran. Do you remember हमने इसके पहले भी जो वॉर हुआ था, मतलब छोटा सा वॉर हुआ था, that US has attacked on some of the nuclear facilities of Iran. That has not lasted for such a long time, like 15-20 days. It was just 2 या 3 दिन का ही छुटपुट लड़ाई हो गई थी. तो उस समय में भी हमने देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट was looking for the options to evacuate the Indians in Iran from the route of Armenia. You remember that? Yes, sir. So where exactly Armenia is located, you will go and check it out. All these are LPs related news. You can read it by yourself. Israel envoy says that every country has the right to act keeping their own interest in mind. So this is what is the reply given by Israeli ambassador to India when Indian government is trying to approach to Iran. Central government hikes Arthia's commission on wheat and paddy procurement. Wheat और पैडी प्रोक्योरमेंट किस चीज के लिए किया जाता है? एनी आइडिया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पीडीएस के लिए किया जाता है. तो जो एजेंट्स होते हैं ना, ये व्हीट और पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए जो काम करते हैं, उनको कमीशन बढ़ाया गया, उनका कमीशन बढ़ाया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इज इट वाइज दैट गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग ओनली व्हीट एंड राइस ओनली, व्हीट एंड पैडी ओनली? हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले. सो यू कैन चेक इट आउट दैट व्हीट प्रोक्योरमेंट 41 रुपए पर क्विंटल में लिया जाता है, 45 रुपीज पर क्विंटल में राइस और 41 किलोमीटर में व्हीट लिया जाता है. और it has been given at a rate of 2 rupees and 3 rupees per kilogram through the PDS. So don't you think this is creating lots of fiscal burden on the government, Sakshi? Yes, sir. We will discuss this issue of PDS, buffer stock, MSP, etc. ये सारे इश्यू हम मेंस क्लास में डिस्कस करेंगे. सो मेंस टॉपिक पेपर GS पेपर 3 issues related to the MSP, PDS, etc. Maharashtra House has passed the freedom of religion bill amid the opposition protest. No, नाव जो देण्यात आलेलं आहे त्या बिलला, freedom of religion. Freedom of religion is already there in the constitution or not? Yes, yes sir. sir, it is already there. So this, ये जो बिल पास जो किया जा रहा है ना, ऑलमोस्ट ऑल द बीजेपी रूल स्टेट में, इट इज जस्ट, मुझे लगता है कि इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ पोसेशन to appease a certain section of the society that will support the hardcore Hindutva, because already the laws are in place. अगर कोई forceful अगर conversion किसी को कर रहा है तो उसको रोकने के लिए already the laws are in place. So this is just an attempt by the BJP ruled state to just have a what you can say, appeasement politics. Clear? Anyways, so the name of the bill which has been given here is the Freedom of Religion Bill that has been passed into the Maharashtra Assembly amid the protest by the opposition. So why the opposition leaders have protested this bill, you can read it by yourself.
Yesterday we have discussed the Gyanpit Award. Now today Sahitya Akademi Award has been declared. Navtej Sarna, Mamta Kalia among the 24 winners. Sahitya Akademi Award for MPSC Current Affairs. प्रश्न विचारले जातात. जर महाराष्ट्रातल्या जर कुठल्या रायटरला जर साहित्य अकादमी अवॉर्ड जर दिलं गेलं असेल तर गो अँड चेक इट आउट. क्वेश्चन, द चान्सेस आर मोर दॅट क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड फॉर MPSC एग्जाम. Go and check it out. यहाँ पर दिया है which are those 24 people who have got the Sahitya Akademi Award. What is the nature of the award? That is copper plate will be given to them. 1 lakh rupees will be given to them, right? Any idea? ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए कितने पैसे दिए जा रहे थे? 1 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज टू द विनर. ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. आज के क्वेश्चन पेपर में हमने डिस्कस किया था. डू यू रिमेंबर? भारत रत्न अवॉर्ड. येस. तो UPSC कोणाला मिळाला हे हा प्रश्न विचारत नाही, पण साहित्य रत्न अवॉर्ड मिळालं तर किती पैसे मिळतात, कोणाला ते देता येऊ शकतात, अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातो का. और साहित्य अकादमी अवॉर्ड कुठल्या गव्हर्नमेंटच्या डिपार्टमेंटच्या मार्फत दिला जातो, that can also be asked to you in statement based question, right? So this is declared by the National Academy for Letters या एजन्सीच्या मार्फत या म्हणजे आपण काय म्हणतो गव्हर्नमेंटच्या ऑर्गनायझेशनच्या मार्फत दिले जातं. लक्षात ठेवा, नॅशनल अकॅडमी ऑफ लेटर्स. इज इट क्लिअर? Yes. छान. बक्षीस किती दिली जाते? 1 लाख रुपये का 5 लाख रुपये? साहित्य अकादमी 1 लाख रुपये आणि ज्ञानपीठ अवॉर्ड साठी 5 लाख रुपये. 5 लाख रुपये. आणि जर सपोज एक्झाम मध्ये स्टेटमेंट दिले की साहित्य अकादमी फॉर साहित्य अकादमी 5 लाख रुपये प्राइज इज गिवन, द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट और रॉंग? रॉंग. आणि नॉर्मली UPSC क्वेश्चन फ्रेम करत असताना हे जे नंबर असतात 5 लाख 1 लाख हे बरोबर देते का चुकीचं देते? चुकीचे. Chalo, now let's move on to next page. There is a great discrepancies in the India's new GDP data. नवीन जो GDP डेटा डिक्लेअर केलेला आहे नवीन बेस इयर प्रमाणे देर आर लॉट्स ऑफ डिस्क्रिपन्सीज. डिस्क्रिपन्सीज म्हणजे काय साक्षी? डिस्क्रिपन्सीज मीन्स इरेग्युलॅरिटी और अनियमितता किंवा तफावत आपण मराठीमध्ये म्हणू. एक्झॅक्ट वर्ड जर मराठीमध्ये जर आपण म्हटलं तर तफावत. तफावत हा शब्द ऐकलाय का? येस सर. सो हा जो नवीन GDP जो डेटा रिलीज करण्यात आलेला आहे गव्हर्नमेंटच्या मार्फत ॲज पर द न्यू द बेस इयर प्राइस, देर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिपन्सीज इन दॅट. सो मेन्स एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो दॅट व्हॉट आर द इश्यूज असोसिएटेड विथ द न्यू डेटा ऑफ द GDP. So while India has just updated the GDP series, discrepancies as percentage of the real GDP are rising again. Many factors are behind it. So what are the factors behind those discrepancies? That is what is explained here. So discrepancies क्या है? That is explained here. Levels in old series, changes in the new series, and why this is happening. Do you think we should add it in GS paper 3 topic economic growth? इकॉनॉमिक ग्रोथच्या टॉपिक मध्ये आपल्याला हे इश्यू ऍड करायला पाहिजे. व्हॉट इज GDP? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इन दी नोट्स. जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि देर आर 3 लेवल्स ऑफ द प्रिपरेशन फॉर UPSC प्रीलिम्स एग्जाम. एनीवन रिमेंबर व्हाट आर दोस 3 लेयर्स? फर्स्ट लेयर में व्हाट यू डू, मतलब पहिल्या राउंड मध्ये तुम्ही काय करता, मतलब यू रीड द टॉपिक कंप्लीटली. In second round, you make the notes as per the requirement of the UPSC, and in third round, you focus more on the current linked issues of that particular topic, right? So mains exam चे 3 layer काय समजून घ्या. First layer मध्ये try to understand the meaning of the topics mentioned in the syllabus. सिलेबस मध्ये जे काही टॉपिक मेन्शन करण्यात आलेले त्याचा अर्थ, जसं की ग्रोथ हा टॉपिक मेन्शन करण्यात आलेला आहे. ग्रोथ मीन्स व्हॉट. टॉपिक आहे एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हॉट. इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ म्हणजे काय, किंवा इकॉनॉमिक प्लॅनिंग टॉपिक आहे, किंवा चॅलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी टॉपिक आहे, किंवा टॉपिक MSP आहे, PDS आहे, टॉपिक्स लाईक डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा. तो हर जो वर्ड जो लिखा गया है मेंस एग्जाम में, उस हर वर्ड का सिलेबस में जो मेंशन किया गया
उसका मीनिंग क्या आहे, उसका बेसिक कन्सेप्ट क्या आहे, उसका त्याचा अर्थ काय हे आपण पहिल्या राऊंड मध्ये आपल्याला समजून घ्यायचं. सेकंड राऊंड मध्ये आपल्याला काय करायचं, इन सेकंड राऊंड व्हॉट यू डू, यू ट्राय टू लिंक इट विथ व्हॉट, यू ट्राय टू लिंक इट द करंट issues, right? So here this is the second layer, right? And third layer मध्ये तुम्हाला काय करायचं, आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस. क्लिअर? तर आता तुम्हाला जीडीपी म्हणजे काय, ग्रोथ म्हणजे काय, हे कन्सेप्ट क्लिअर झालेले आहे साक्षी. येस सर. आता नेक्स्ट लेवलवर काय करावं लागेल, जीडीपी रिलेटेड, इकॉनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड जे काही इश्यूज चालू आहेत, जीडीपी कॅल्क्युलेशनच्या बेस इयरच्या चेंज मध्ये झालेले जे काही प्रॉब्लेम आहेत, त्याच्यामुळे काय डिस्क्रपन्सी झालेले आहेत आणि हे का घडत आहे, ह्याच्यावर मेन्स एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला जातो. सो यूपीएससी मेन्स एक्झाम इज हॅव्हिंग टू पार्ट. वन पार्ट इज ऑफ द स्टॅटिक अँड सेकंड पार्ट इज व्हॉट, द करंट इश्यूज. कळालं? तो पहिल्या पार्टसाठी तुम्हाला ही महत्वाचं समजून घेणं गरजेचं आहे, मीनिंग, आणि सेकंड पार्टच्या आन्सरसाठी तुम्हाला करंट अफेअर सोबत लिंक करणं गरजेचं आहे. कळालं? मग आता जीडीपीचं बेसिक सर्वांना कळालेलं आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट दोज हू हॅव अटेंडेड माय basics of Indian economic class. Those who have not attended, don't worry, I'll be explaining it to you. But you also need to follow the same process. What is that? First, try to understand what is GDP. Then try to understand what are the issues about the GDP, and then try to write the answer related to the issues about the GDP. Clear? Strategy? This is what is the smart way of preparation. Now just keep on reading and reading and reading for 12 hours, 15 hours. That doesn't work if you don't follow this process. Yeah, you will get the information, you will get the knowledge, but you cannot qualify the exam if you don't follow this process. Now let's move on to next page. Iran survives, Bibi gains. Who is Bibi? Any idea? Benjamin Netanyahu is also called as Bibi. तो ईरान सर्वाइव हो गया है, बीबी हैज गॉन गेन, मतलब उनको फायदा हो गया है. इंडिया इज इन डिलेमा. व्हाट इज द डिलेमा ऑफ इंडिया? वेदर टू सपोर्ट यूएसए, वेदर टू सपोर्ट इजराइल, और वेदर टू सपोर्ट ईरान. इंडिया वाज इन डिलेमा, राइट? सो 5 टेक अवेज आफ्टर द 2 weeks ऑफ वॉर. तो ये 2 हफ्ते का जो वॉर चल रहा है उसके से रिलेटेड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. सो इज इट वर्ल्ड वॉर 3? तिसरं महायुद्धासारखं युद्ध चालू आहे का? नो, इट इज नॉट वर्ल्ड वॉर 3, बट द इम्पॅक्ट ऑफ दिस वॉर इज सिमिलर लाईक द वर्ल्ड वॉर. मतलब दुसरा महायुद्ध पहिल्या महायुद्धाच्या प्रकार जसे परिणाम होत होते तसेच परिणाम ह्या युद्धाचे देखील चालू आहेत. इराण इज नॉट कोलॅप्सिंग. इट वॉज एक्सपेक्टेड, मतलब अमेरिकेला असं वाटलेलं होतं की 1, 2, 3 दिवसामध्ये इराण सरेंडर करेल, but it is not collapsing. There will be a regime change in Iran immediately after the death of Ayatollah Ali Khamenei, but this has not happened. The people of Iran has accepted the new supreme leader of Iran, Mustafa Ali Khamenei. So Iran has not collapsed, although Iran has not won the election, but it has not collapsed. BB is the most beneficiary. सर्वात जास्त फायदा या युद्धामध्ये जर कोणाला झाला असेल तर कोणाला झालं आहे? इस्रायल. The president of प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल. बिकॉज अब क्या होने वाला है, इजराइल में इलेक्शंस होने जा रहे हैं आफ्टर 2-3 months. सो बेंजामिन नेतन्याहू may get more votes, बिकॉज आपण नेहमी बघतो की एखाद्या देशाचं युद्ध झालं तर त्या नेत्याला लोक काय करतात, मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदान करतात आफ्टर दिस. येस ऑर नो? सो बीबी इज द बेनिफिशियरी. तो इलेक्शनच्या अगोदर ही वॉन्टेड टू हॅव दिस वॉर अँड इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट. बट इंडियाज स्ट्रॅटेजिक डिलेमा. डिलेमा ये शब्द आपण ऐकलेलं होतं. डिलेमा कुठे ऐकलेलं होतं? GS4. GS4 डिलेमा. डिलेमा मतलब कंफ्यूजन कि क्या हमें अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए, क्या हमें ईरान को सपोर्ट करना चाहिए. अगर मॉरली और एथिकली अगर देखा जाए तो इंडिया शुड हैव सपोर्टेड टू विच कंट्री? बिकॉज व्हेन वी ऑब्जर्व we can say that it was unnecessary from the part of US and Israel to attack on Iran, because आरोप ये लगाया जा रहा था ईरान पे कि that it is trying to enrich the uranium, न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा है, और उसको रोकने से करना चाहिए, ऐसे अमेरिका और इजराइल कह रहा था. on the other hand we know America and Israel themselves have the nuclear weapons. मतलब असे देश इराणला
न्यूक्लिअर वेपन बनवण्यासाठी परावृत्त करत होते की ज्यांच्या स्वतःकडे न्यूक्लिअर वेपन आहेत. दिस इज वन थिंग. सेकंड, Iran was having a dialogue. Iran was discussing. Iran was ready to keep their nuclear facility to be open for the IAEA, that is International Atomic Energy Agency's, the observation, and they have agreed that they will not use that nuclear facilities for the nuclear weapon making. तो उसके बावजूद भी इस तरीके के जो अटैक यूएस और इजराइल के द्वारा किए गए on the Iran, that was unjustified morally and ethically as well. Yes or no? And we have also seen that Iran and USA and Israel has attacked on the the schools where more than 150 school going children have died. Innocent people in Iran have died. तो अगर moral and ethically देखा जाएगा तो we should support whom? ईरान. लेकिन strategically और अगर हम दूसरे point of view से अगर देखेंगे, because America is one of the largest trading partner of India. America is going to have a trade deal with India. Israel, just वॉर से 2-3 दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजराइल चले गए थे और वहां पर इंडिया ने कहा था कि इजराइल इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट टू इजराइल, वी विल ऑलवेज सपोर्ट टू इजराइल, ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था. तो यहाँ पर डिलेमा था, राइट, whether to take the side of America or whether to take the side of Iran. So this is what is the problem, right? So India is in strategic dilemma. So this is the fourth in this, and last है, is there an off ramp? तो क्या अब ये युद्ध को रोका जा सकता है? अगर युद्ध को रोकना है तो क्या करना चाहिए? What should be done? Dialogue and discussion should be done, right? So do you think India should take a lead in stopping this war? India should talk with both Iran and Israel, and because Israel is also good friend of India. Iran is also good friend of India. नॉर्मली ऐसे होता ना की दो दोस्त, मतलब अगर वॉर हो रहा है तो मेडिएटर जो असतो तो दोघांचा चांगला मित्र असेल तर तो मेडिएशन चांगला करू शकतो. Yes or no? Yes, sir. So don't you think that India should take this opportunity that being very close to both the side of the warring country, that is Israel and Iran, it should try to mediate and have a dialogue and resolve this dispute? Yes, sir. Check. So add these 5 takeaways with respect to this 2-week war. Economic page, Russian Urals crude delivered, price of India at record high. तो इंडिया में जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं. The prices of the gold have not increased as expected. Why? What is the price of 10-gram gold now in India? 1,60,000. Okay. Okay, so this is all there in the today's newspaper. Any doubts? Fine. So we'll stop it here. We'll have the geography class at 10:15. All of you please join. Today we will Yes, sir. continue the next important topic of the drainage system of India. तो हमने पेनिनसुला एंड हिमालयन रिवर सिस्टम हमने डिस्कस किया है. तो the other aspect of the drainage pattern in India that we will discuss in today's class. So most probably we will finish with the river system topic in India. So tomorrow we will start with the next topic, that is monsoon mechanism in India. So join at 10:15. Okay, sir.